Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classification of viruses as well as some viral diseases. So let's move to the class board. So dear students, classification of viruses. Could be asked in the short questions, and it is also important regarding the MCQs point of view. Classification of viruses. A short topic just below the life cycle of bacteriophages. So dear students, as far as the classification is concerned, so virus morphology, and nucleic acid properties are important regarding the classification of animal, plant, and bacteriophages. यहाँ पर एनिमल और प्लांट का मतलब है कि इनके जो वायरसेस है, the viruses which infect the animals and plants. Clear? So the classification of animals and plants and the bacteriophages, इनकी classification के लिए दो major criteria which are very important. It could be asked in the MCQs. Number one is the morphology, and number two are the nucleic acid properties. Clear? So first of all, we'll see the nucleic acid on the basis of nucleic acids. तो dear students, chapter number 2 में details से आपको पढ़ाया that there are two types of nucleic acids. Yes, the deoxyribonucleic acid and the ribonucleic acid, means the DNA or RNA viruses. Clear? So nucleic acid could be on the basis of nucleic acid. The viruses can be classified into two categories: the DNA containing viruses and the RNA containing viruses. Clear? और इसी के आगे एक एग्जाम्पल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, डीएनए वायरसेस की. अब जो डीएनए वायरस है, दैट इज इट्स एग्जाम्पल इज स्मॉल पॉक्स. क्लियर? दैट इज अ डीएनए वायरस एज वेल एज द बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? द वायरसेस व्हिच ईट बैक्टीरिया. क्लियर? And as far as the RNA is concerned, as a nucleic acid or the genome, so RNA containing viruses, it includes the HIV. इंशाल्लाह आगे चलकर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Human immunodeficiency virus, as well as another example is there like the polio virus. Clear? So that is an RNA containing virus. Clear? और दूसरी जो हम इसमें देख सकते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा एक और फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अकम्पेनिड विद न्यूक्लिक एसिड्स. तो न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ पर मौजूद हैं इनके? दे आर प्रेजेंट इन अ प्रोटीन कोड, एक इनक्रीसिंग है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं. सो उनके बिहाफ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप, इसको हम एनवेलप कैटेगरी में भी ले सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप, the viruses may be categorized into three. Dear students, number one are the enveloped viruses.
यानी कि जो कैप्सिड के ऊपर एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वायरस के पास जो ये एनवेलप होगा, ये उसके होस्ट के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये उसका होगा, इसका अपना ये एनवेलप नहीं होता, ठीक है। सो ये चीज़ आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि एनवेलप जिसके पास भी होगा वो उसका अपना नहीं है उस वायरस का, बल्कि वो जिस सेल में एंटर होता है उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पेशली उसको वो तोड़कर और उसको ऊपर ऊपर ले लेता है, ठीक है। इस तरह से नेकेड नंबर 2 आर द नेकेड वायरसेस और which are also called as non-enveloped. Non-enveloped, clear? And the third category is the complex. Are the complex viruses, clear? So as far as enveloped virus is concerned, तो इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे चलकर डिजीजेस में भी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। जो स्मॉल पॉक्स वायरस है दैट इज एनवेलप्ड। डीएनए वायरस है पहली बात, और दूसरे नंबर पर एनवेलप्ड है। डीएनए एनवेलप्ड, दैट इज स्मॉल पॉक्स वायरस, क्लियर? यहाँ पे हम वायरस ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम नॉन एनवेलप्ड की बात करेंगे तो नॉन एनवेलप्ड के अंदर पोलियो वायरस, ठीक है। ये आरएनए वायरस भी है, मतलब कि एज फार एज द देयर न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज आर कंसर्न इट इज आरएनए, बट इट इज ऑल्सो नॉन एनवेलप्ड, द पोलियो वायरस। क्लियर? एंड एज फार एज द कॉम्प्लेक्स वायरसेस, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ऐसे वायरसेस, नॉर्मली हमने बात की थी कि या तो वो हेलिकल होते हैं या वो आइकोसाहेड्रल होते हैं, यानी कि पॉलीहेड्रल शेप होती है। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि इनके क्लियर कट ना तो हेलिकल है, ठीक है, ना ही वो उनके अंदर वो दूसरी जो सी आइकोसाहेड्रल यानी कि क्लियर कट आपको नजर आता है, जो इट्स अ मिक्सचर, क्लियर। सो मतलब कि इसके इन बिटवीन ये मौजूद होता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं। इट्स एग्जांपल इज द पॉक्स वायरस। And number 3, the third category is the morphology. So what is morphology, dear students? हम यहाँ पर external morphology की बात कर रहे हैं, clear? So external morphology especially where we are dealing with here, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी 3 तरह के वायरसेस होते हैं। Either they are rod-like or rod-shaped, ठीक है, और they are spherical or they are tadpole-like. Either they are the tadpole-shaped. जी तो dear students, so rod-shaped virus, इसकी example that is given in our syllabus, that is TMV. So what is TMV, dear students? हम पढ़ चुके हैं historical perspective के अंदर, that is tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus. And as far as spherical viruses are concerned, that is the polio virus. It is also one of the smallest viruses, and the tadpole-like, they are the bacteriophages. बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है, इस बात को। सो बैक्टीरियोफेजेस दे आर द बैक्टीरिया ईटर्स और द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, देयर शेप इज टैडपोल लाइक। सो टैडपोल लाइक इनकी मैं यहाँ पर रॉड शेप्ड इस तरह से होगा, लाइक जस्ट लाइक अ रॉड, सिंपल। सो दिस इज रॉड शेप्ड and this one is spherical, and the tadpole-like viruses so that is tadpole. It is rod shaped
and spherical. And here is the tadpole shaped. So इस तरह से इनकी shapes होती हैं on the basis of morphology. So हम इसको इस तरह से classify करते हैं. तो जब भी हम इनकी properties बताते हैं तो इनको combined करके बता देते होते हैं. Clear? लेकिन ये दो major categories हैं जिसकी base को हम इनको classify करते हैं. Clear? Now the next topic is very very important regarding short as well as MCQs as well as long question. Long question के तौर पर भी पूछा जा सकता है. That is some viral diseases. So dear students, as far as the viral disease is concerned, there is a long list of viral disease, but some of them which have been or common, which are common in Pakistan, they have been discussed in our book or in the syllabus. तो उसको हम देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ का जिक्र हुआ है. First of all, like smallpox. इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे. Then there is herpes simplex, another disease which will be discussed in detail. Then is influenza. Then mumps and measles. And the poliomyelitis. So these are some disease which happen or which are common in Pakistan. So viral disease के अंदर हम इनको डिटेल से देखने वाले हैं. So ये 5 डिजीज़ हैं. मतलब कि जो अंडर द हेडिंग ऑफ सम वायरल डिजीज़. वैसे तो आगे भी डिस्कस हुई है, HIV भी डिस्कस हुई है, यानी कि एड्स जो है वो भी इसमें डिस्कस है. इसके अलावा हेपेटाइटिस, दैट इज़ अनदर वायरल डिजीज़, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर. दैट इज़ हेपेटाइटिस and also AIDS. So these are the viral diseases which we are going to discuss. Very, very important and just interesting topic is this. Clear? So let's start from the first one, that is smallpox. Smallpox. हमारा उर्दू में इसको चीचक कहा जाता है. चीचक की बीमारी है. क्लियर? सो इट इज़ अ वायरल डिजीज़. और डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियसली भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि ये इन द प्रीवियस सेंचुरीज ये एक डेडली डिजीज़ समझा जाता था, जैसे कि कोविड है. ठीक है, कोविड-19 दैट इज़ द डेडलीस्ट, वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज़ ऑफ दिस सेंचुरी. सो इसी तरह से स्मॉल पॉक्स भी कभी इसी तरह से ये डेडलीस्ट डिजीज़ हुआ करती थी. But now it has been almost eradicated from the world over, but still it is present in some developing countries, the third world countries. A few of the cases are there. So smallpox, its causative agent is definitely we are discussing the viruses, so it is virus, but which virus? That is called as smallpox virus. Clear? And this virus is remember one thing regarding MCQ's point of view, it is DNA enveloped virus. So it is important regarding the MCQ's point of view that smallpox virus is a DNA enveloped, RNA enveloped, DNA non-enveloped or RNA non-enveloped. So the correct
correct option is DNA enveloped virus. Clear? So now, the smallpox is a viral disease caused by smallpox virus. Here, and that is a DNA enveloped virus that has been, or that had occurred as epidemics in China as early as 12th century BC. Clear? As early as 12th century, 12वीं सदी में चाइना में ये एपिडेमिक की शक्ल अख्तियार कर गया था 12वीं सदी में, ठीक है, BC, बिफोर क्राइस्ट. सो एपिडेमिक के हवाले से मैंने आपसे डिस्कशन की हुई है. एपिडेमिक ऐसी डिजीज़ को कहा जाता है जो जिनका आउटब्रेक एक स्पेशलाइज्ड मतलब एक अच्छे खासे एरिया के अंदर मौजूद हो, लेकिन ये ग्लोबल नहीं हो. इट इज़ नॉट डजंट ट्रांसफॉर्म्स ग्लोबली, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन एक खत्ते के अंदर एक डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर ज़रूर मौजूद होता है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, एपिडेमिक्स जितनी भी डिजीज़ होती हैं आमतौर पर जो वायरल डिजीज़, दे आर वेरी डेंजरस. सो as early in 20th century it was a common disease. It was a common disease all over the world. And dear students, पूरी दुनिया में फैली और मतलब कि फिर 20वीं सदी के अंदर ये काफ़ी, जैसे कि कोविड जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, पहले ये एपिडेमिक रही 12वीं सदी के दौरान, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये फैलना शुरू हुई और 20वीं सदी के शुरू में इन द अर्ली 20th century it was a common disease all over the world. Clear? In this disease, now its pathophysiology. So what happens in this disease? So in smallpox, small fluid-filled vesicles are formed over the body which become pustules. So initially they are fluid-filled vesicles which become pustules. What are pustules? The vesicles containing pus
in them are called as pustules, which become pustules later on and form pitted scars which are called pocks, POCKS. Clear? अब इसको जरा समझ लें. So let's suppose this is the surface of the body. और इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर ये वेसिकल्स बनेंगे, छोटे छोटे ऐसे उभार बनेंगे. बट दे आर फ्लूइड फिल्ड. इनिशियली दे आर फ्लूइड, सादा जैसे एक लाइक simple plasma or like serum like material is there, fluid is there. So these are simply fluid filled vesicles, clear, which later on become pustules. अब दोस्तों चूंकि ये इन्फेक्शन है, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो वाइट ब्लड सेल्स को वहाँ पर भेजेगा जहाँ पर ये पैथोजन पहुँच चुका है और ये वायरस पहुँच चुका है. और इसी दौरान ड्यूरिंग दिस कॉम्बैट, इस लड़ाई के दौरान कुछ वाइट ब्लड सेल्स मारे जाते हैं, कुछ जो हैं वो वायरसेस मारे जाएंगे, रिजल्टिंग इन अ मटेरियल फॉर्मिंग दैट इज कॉल्ड एज पस. क्लियर? नाउ these fluid filled vesicles, they will become filled with pus, जिसको उर्दू में हम पीप कहते हैं. ग्रीनिश वाइट कलर का एक लिक्विड सा होता है जो कि बनेगा. So this is called as, these are called as pustules. Clear? The pus containing vesicles. Pus containing vesicles. Clear? And after that, जब ये हील होते हैं, that is, अगर हम कॉस्मेटिकली देखें तो एक इट इज नॉट गुड. तो ये इस तरह से जब हील होगा तो इस तरह से पिटेड स्कार्स बनेंगे यहां पर. सो पिट किसे कहते हैं? गड़े को, डिप्रेशन को. ठीक है? और सो दीज आर pitted scars which are called pocks. ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, what are pocks? POCKS pocks, not this one pocks. Clear? So dear students, एक तो pit है यहाँ पर. Pit means गड्ढा, depression. There is a pit. Clear? और scar किसे कहते हैं? Scar means जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू हील होता है तो वहां पर एक परमानेंट निशान रह जाता है, ऑलमोस्ट. ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ परमानेंट मार्क ऑफ हीलिंग. क्लियर? दैट इज कॉल्ड अ स्कार. और जैसे कि बाज़ को बचपन में चोट लगती है, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ऑन माई राइट आई देयर आर द स्टिचेस. यहाँ पर एक स्कार मार्क मेरा मौजूद है. दैट इज़ माई, और यही मेरा मतलब कि दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन माई CNAC दैट देयर इज़ द मार्क्स ऑफ स्टिचेस. ये स्टिचेस के मार्क, ये मुझे बहुत बचपन में चोट लगी थी. ठीक है? जब मैं चल भी नहीं सकता था. और यहाँ पर अभी तक देखें ये मौजूद है वो निशान स्टिचेस का. सो दीज आर कॉल्ड एज स्कार्स. ठीक है? लेकिन यहाँ पर स्कार्स किस तरह के बनते हैं? पिटेड. ठीक है? डिप्स पड़ना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर वो बनता है, दाना बनता है जिसको हम वेसिकल कहते हैं. और जब वो हील होता है तो अंदर की तरफ धंसे हुए वो फेस के ऊपर और पूरे जिस्म के ऊपर वो स्कार मार्क्स जो है वो रह जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज पिटेड स्कार्स. क्लियर? इन 1950s, in 1950s, the disease means the smallpox, due to immunization
and vaccination and some other measures or controls the disease was controlled up to a significant ratio. Clear? But it still prevails in the third world countries, means the developing countries, where there are many people affected. और पिछले कुछ अर्से में फिर से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से इसके केसेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए थे. बट रिमेंबर वन थिंग, इन 1980 World Health Organization declared that smallpox has been eradicated from the world. Clear? तो 1980s में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर कर दिया था कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, एरेडिकेट हो चुकी है. बट स्टिल देयर आर फ्यू केसेस इन द प्रीवियस डेकेड्स. सो ड्यू टू सर्टन lack of awareness and lack of resources in those countries, so that is smallpox. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ और डिजीज़ को, वायरल डिजीज़ को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.